Hello students, welcome to social science class. Here we are with another topic, and today is how is a major policy decision taken. एक बड़ा पॉलिसी का फैसला कैसे लिया जाता है. Pension site order, it was quite short, barely one page. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let's see how the decision was taken and what happened later. ऑर्डर आता है एक सर्कुलर और नॉर्मल ऑर्डिनरी जैसा सर्कुलर लगता है, एक पेज वाला, लेकिन कई साल तक कंट्रोवर्सी का बायस बन जाता है. बात चिढ़ जाती है उस पर. कैसे डिसीजन लिया गया और फिर क्या हुआ हम देखेंगे. A government order on August 13, 1990, the Government of India issued an order. It was called the Office Memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012 oblique 31 oblique 90 dash EST as dated 13th of August 1990. एक नंबर दिया हुआ ऑर्डर का बाज़ाब्ता. अगस्त 13 की बात है, 1990 में अगस्त 13 की बात है. गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया. ऑफिस मेमोरेंडम उसको कहा गया. उस ऑर्डर को तमाम गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरह ही ये ऑर्डर जो था बिल्कुल एक नंबर दे के इशू हुआ था, और इसको नंबर डेट जो मैंने पढ़ा यही दिया हुआ था, और डेट भी इसको मेंशन की हुई थी सारा, जैसे हर किसी गवर्नमेंट ऑर्डर पे होता है. द जॉइंट सेक्रेटरी एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग in the Ministry of Personnel, Public Grievance, and this order announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under Government of India are reserved for socially and educationally backward classes. SEBC is another name for those people who belong to castes that are considered backward by the government. जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया था, और इस ऑर्डर में अनाउंस किया गया था कि 27% जो वैकेंसीज होंगी सिविल पोस्ट्स की सर्विसेज में गवर्नमेंट के, वो रिज़र्व रखी जाएंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक और नाम है इसका, और इसको गवर्नमेंट एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास मानती है. The benefit of job reservation was still then available only to scheduled castes and scheduled tribes. Now a new third category called SEBC was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for these jobs. पहले SC/ST के लिए रिजर्वेशन थी, अब एक नई क्लास बना दी गई SEBC. सिर्फ वही लोग जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वही लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए एलिजिबल थे, और बाकी लोग
इसमें बाकी लोग जो थे उनके लिए रिजर्वेशन नहीं थी ना, वो compete कर सकते थे। Decision makers who decided to issue this memorandum clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Grievance and Pensions, of which department was a part. We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our countries. You have already read in the previous class about some of them. Let's go over some of them. डिसीजन मेकर्स ने ये बनाया था मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम। इतना बड़ा फैसला था, जाहिर सी बात है जिस ऑफिसर ने इसको साइन किया हुआ था ये उसकी बस की बात नहीं थी कि वो इतना बड़ा फैसला ले। वो तो बस इम्प्लीमेंट करने वाले थे। और ये ऑर्डर जो था, ये डायरेक्शन किसकी थी? मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, जिसका एक ये डिपार्टमेंट एक हिस्सा है। तो we can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. इसके बारे में आपने पहली क्लास में कुछ पढ़ा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। Let's go over some of the main points that you covered then. आपने उस वक्त जो देखा उसके कुछ मेजर पॉइंट्स कवर करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। He takes most of the decisions in cabinet meetings. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और एक्चुअली गवर्नमेंट की जितनी पावर होती हैं ज़्यादा वही एक्सरसाइज करता है और डिसीजन बना लेता है कैबिनेट मीटिंग्स में। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। पार्लियामेंट में तीन चीज़ें होती हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा एमपीज़ की मेजॉरिटी लोकसभा में होनी चाहिए। सो वेर आर these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let's find out. तो इसमें हमें ये बात देखने को मिली है कि ऑफिस मेमोरेंडम जिस आर्डर की हम बात कर रहे हैं इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पार्लियामेंट पूरा इन्वॉल्व होता है। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward class commission in 1970. इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है एक चेन ऑफ कल्मिनेशन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था 1979 में। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल। उसको हेड कर रही थी बीपी मंडल। बीपी मंडल की सरबराही में कमीशन बनाया था 1979 में और इट वाज पॉपुलरली
known as Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was 27% government jobs be reserved for socially and educationally backward classes. The report and recommendations were discussed in the parliament for several years. Many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of commission's recommendations. Then came the Lok Sabha elections of 1989. In its election manifesto, Janata Dal promised that if it voted to power, it would implement the Mandal Commission report. गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था इसलिए कि वो रिकमेंड करे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में और बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी और इसमें रिकमेंडेशंस दे दी, और इन रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो रिजर्व की जाएँ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। The report was discussed in the parliament. For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission recommendation. कई साल तक क्या होता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और कई लोग जो थे, लीडर जो थे, वो डिमांड करते रहे कि मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर लोकसभा इलेक्शंस आए 1989 की बात है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर उसको पावर मिला तो वो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करेगा। जनता दल did form the government after this election. Its leader was VP Singh, became the prime minister. Several developments took place after that. जनता दल पावर में आई, वीपी सिंह वज़ीर आज़म बने और बहुत सारे फैसले भी लिए गए। Full of different views and opinions of this issue led to widespread protests and counter-protests, some of which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among the people of different castes in India necessitated job reservation. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to the backward communities. This would be denied jobs. Even though there could be more difficulty, there could be more qualified, some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. In this chapter, we won't discuss whether the decision was good or not. We only take the examples to understand how the major decisions are taken and implemented in the country. To resolve the dispute, you know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of government decisions. Some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as
Indra Sawani and others versus Union of India case. 11 judges of Supreme Court heard arguments of both sides. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the Government of India was valid. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its decision through a statement in both the Houses of Parliament. The decision of the Cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the Cabinet decision and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the Union government. This was how OM number 36012/31/90 was born on 13th August 1999. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. फिर क्या होता है कि कंट्रोवर्सी का बायस बन जाता है। जब जनता दल गवर्नमेंट ने आर्डर इशू कर दिया तो उसके बाद मसला उठ गया। आधे लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए, आधे लोग इसके हक़ में आ गए। कुछ ने कहा कि ये गलत है, कुछ ने कहा सही है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुँचे, बहुत सारे केस बने। फिर तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब किया इंदिरा सवानी के नाम से, इंदिरा सवानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आर्डर ठीक है और कुछ इसमें एडिट करने के लिए कहा गया, तो जो उन्होंने किया तो इस तरह से ये आर्डर आ गया। तो फिर केस आगे चलने वाले कुछ महीनों तक इंडिया में ये बहुत बड़ा मसला बन के रहा। सो दिस इज़ सफाइस फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।